लेट्स बाय अ कार नाउ। मैं बैंक के पास लोन लेने गया और मैंने बोला इस बार तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। हे गाइस, जैसे ही सिमरन को आज का टॉपिक पता चला उसने बोला कि मैं वीडियो में नहीं आऊंगी, और वो इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है और थोड़ा सा टेक्निकल भी। लेकिन यू नो व्हाट, we will actually prove Simran wrong today and we'll show her that this topic can be very interesting, it's important and we'll try to make it as simple as possible. तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में एंड हाउ टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री, ताकि जब आप घर खरीदने जाओ तो आपको बेस्ट से बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एलिजिबिलिटी मिले. And what makes us eligible to talk about this is that we have arrived here for less than 3 months एंड हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो 618 से 745 हो चुका है, अभी 3 महीने भी नहीं हुए. एंड बाय द वे, आज हमारे चैनल पे एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, वीडियो का टॉपिक देख के ये लग रहा होगा दैट वी आर एक्चुअली गोना टॉक अबाउट हाउस, बट वी विल नॉट. अभी एक तो हमें सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, तो घर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते. एंड एक छोटा सा बड़ा वाला रीजन ये भी है कि दैट वी डू नॉट हैव एनी मनी. बट गाइज, हाउस विल बी द बिगेस्ट परचेज दैट यू मेक इन कैनेडा. एंड चाहे वो 1 साल बाद हो या 5 साल बाद, यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज यू लैंड इन कैनेडा. एंड इट एक्चुअली स्टार्ट्स बाय गोइंग टू द बैंक ऑन योर फर्स्ट डे एंड ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, और उसके साथ हमें मिलता है क्रेडिट कार्ड. एंड अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने अपना बैंक अकाउंट स्कोशिया बैंक में खुलवाया था. एंड जब स्कोशिया बैंक में बैंक अकाउंट खुलाओ तो एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसकी लिमिट होती है $3000, जो मेरी भी है और सिमरन की अलग अलग, $3000 पर पर्सन. नाउ द क्वेश्चन इज, वंस यू हैव दिस क्रेडिट कार्ड, व्हाट डू यू डू? उसके लिए हम बात करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है, अरे कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है, इट्स जस्ट मी फ्रॉम द पास्ट. आई गॉट माई फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन 2011, द डे आई एक्चुअली गॉट माई जॉब. उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 50,000 रुपीज. आई बॉट अ ब्लैकबेरी फॉर 15,000 रुपीज एंड आई बॉट अ सोनी टैबलेट फॉर 30,000 रुपीज. 50,000 लिमिट थी, 45,000 मैंने खर्च कर दिए. अभी एक सैलरी नहीं आई थी और सैलरी बहुत कम थी, मेरी क्रेडिट लिमिट से भी कम. नाउ यू वुड से, ओ मैन, नवजोत इज ओल्ड, ब्लैकबेरी की बातें कर रहा है. But guys, that's not the point. The point is that when you get a credit card in Canada, you do not buy a bunch of nonsense. And वो इसलिए because credit card से you actually make a credit history and हमें एक credit score भी मिलता है. A credit score is something that actually tells the lenders and financial institutions that you can actually borrow money responsibly. And जितना अच्छे से आप credit card use करोगे, उतना ही आपको बढ़िया interest rate मिलेगा when you go borrow money for buying a car or to buy a house. The credit score in Canada actually ranges from 300 all the way up to 900, and the average credit score in Canada is 650. If you ask me, that's really bad. Now let me tell you how bad it is. Remember the time when I told you that मैंने BlackBerry खरीदा था और सोनी का टैबलेट खरीदा था और मैं उसको पे नहीं कर पाया था. इनफैक्ट मैं पूरे 2 साल तक पेमेंट, या तो मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थोड़ी सी करता था जितनी रिक्वायर्ड होती थी, या मैं करता ही नहीं था. एंड इट वॉज रियली बैड. एंड 2 साल में मेरा जो क्रेडिट बैलेंस था वो 1 लाख से ऊपर निकल चुका था और मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था. और उसके बाद मेरे को एक बोनस मिला एंड थैंक गॉड आई वॉज एबल टू पे ऑफ दैट एंटायर 1 लाख रुपीज. एंड उस दिन के बाद आई थॉट दैट आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन. रॉन्ग. एंड देन आई वॉन्टेड टू बाय अ कार. उसके लिए मैं बैंक गया, बैंक से मैंने लोन मांगा, बैंक ने मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करा एंड गाइस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट माय क्रेडिट स्कोर इज एज लो एज 610 और मेरा लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर रेकलेस विद योर स्पेंडिंग. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट द क्रेडिट स्कोर इज एक्चुअली मेड ऑफ. 35% of the credit score is your payment history. That is why when you get a credit card in Canada, never miss a payment and always pay it before time. मैंने यही गलती करी थी. मेरे को 21 डेज मिलते थे टू पे ऑफ द क्रेडिट कार्ड और मैं वो पे नहीं करता था, मैं भूल जाता था. काफी 1-2 महीने के डिले हो जाते थे और उसके ऊपर मेरे को लेट फाइन लगती थी, फीस लगती थी. ऐसे करते करते मेरा क्रेडिट स्कोर जो था दैट एक्चुअली ड्रॉप्ड अ लॉट एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई कुड नॉट गेट दैट कार लोन. गाइस, जब हम स्कोशिया बैंक गए थे, दे एक्सप्लेन टू अस दैट आपको 21 डेज मिलेंगे आफ्टर योर क्रेडिट पेमेंट इज ड्यू टू एक्चुअली पे द बिल. बट दे ऑल्सो सेड कि अगर आप 14 डेज में दोगे, इट विल एक्चुअली इंप्रूव योर क्रेडिट रेटिंग. अब ये बैंक कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा.
गाइस ये वही वाली चीज है कि आपने कल को 10,000 रुपए अपने फ्रेंड को दिए और उसने आपको बोला कि वो 1 महीने बाद आपको पैसे देगा। उसके बाद एक बोनस आया, 3 दिन बाद उसने आपको 10,000 वापस कर दिए। नाउ यू विल बी मोर देन विलिंग टू एक्चुअली गिव हिम द मनी अगेन इफ ही नीड्स इट, बिकॉज नाउ you trust this guy. Same goes for financial institutions and credit bureaus. So you never have to miss a credit card payment, and you should always pay it before the due date. But late payment was not the only reason why my credit score was bad. Which brings us to the second rule of using a credit card. Do not use more than 30% of your credit limit. So जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी credit limit is $3,000 per person. We should not use more than 30%, which is $900 every month. बाकी अगर कोई खर्चे होते हैं तो यूज योर डेबिट कार्ड और कैश। गाइस दिस एक्चुअली मेक्स 30% ऑफ योर क्रेडिट स्कोर, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी स्टिक टू दिस। अगर हम इससे ज़्यादा खर्चा करते भी हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एक्चुअली पे इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल एंड डू नॉट वेट फॉर द ड्यू डेट टू कम। गाइस ये इसलिए बिकॉज अगर आपको क्रेडिट जो मिला है वो $3,000 का है एंड आप 2,000 2,500 अगर हर महीने यूज करते हो, दैट एक्चुअली टेल्स द क्रेडिट ब्यूरो दैट यू कैन एक्चुअली नॉट control your spending and you are actually borrowing a lot more than what you earn, which is not a good thing and it will impact your credit score. अब जब मेरे को लोन नहीं मिल रहा था, I again said no more credit card. In fact, this time I actually went to the bank and cancelled my credit card and I actually spent all my जितना भी एक्सपेंडिचर था उसके बाद पूरे 1 साल तक I did it on debit card और कैश। उसके बाद मैं हांगकांग चला गया। हांगकांग में भी 4 साल I was using कैश, डेबिट कार्ड, कभी कभी क्रेडिट कार्ड, बट I was much more prudent in using that credit card. And जब मैं इंडिया वापस आया, then I again thought let's buy a car now. मैं बैंक के पास लोन लेने गया और मैंने बोला इस बार तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। Let me tell you a secret, चॉप होने वाली है अभी इसकी। And I was shocked. मेरा क्रेडिट स्कोर अभी भी कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ था। I think 610 के आसपास था। And even if they gave me a loan now, they would actually charge me a very high interest rate. मैंने पूरा बैंक सर पे उठा लिया था, लेकिन guys, I was very wrong and I actually learned it the hard way. Which brings us to the third rule of credit cards: use it and do not close it ever. ये इसलिए that credit card is actually the easiest way for the credit bureau, the lenders and the banks to know that you can actually borrow money responsibly. अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करोगे तो there is no way that your credit score will actually improve even if you have $1 million in your bank account. This is called credit length and this actually contributes 15% to your credit score. And guys, मेरा इस बार जो क्रेडिट रेटिंग थी वो इनफैक्ट थोड़ी सी कम हो गई थी and that's because जब लास्ट टाइम मैंने कार लेनी थी तब बैंक ने एक इंक्वायरी करी थी क्रेडिट ब्यूरो से and the loan was rejected. This is called hard inquiry and this actually makes 10% of your credit score. And अगर कभी आपका लोन रिजेक्ट हुआ, you will actually see a decline in your credit score and this will actually stay on your account for up to 7 years. So rule number 4 is never ever go borrowing money for a car or a house if your credit score is low. अब गाइज ये करना ना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज जब हम यहाँ पे आते हैं हमारी जॉब लग जाती है, क्रेडिट स्कोर अब जॉब वॉब लग चुकी है बट क्रेडिट स्कोर अभी भी लो है। हम जाते हैं कार खरीदने, फाइनेंस कराते हैं, उसको फाइनेंस कराने के लिए वो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर कम निकलता है, लोन रिजेक्ट हो जाता है और उससे हमारा क्रेडिट स्कोर और नीचे हो जाता है। एंड ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग होते हैं एंड इट शुड बी अवॉइडेड। गाइस क्रेडिट स्कोर चेक करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो टू योर बैंक, फॉर अस इट इज स्कोशिया बैंक की वेबसाइट पे जाओ, अपना अकाउंट में लॉग इन करो, उसके अंदर राइट साइड पे नीचे आएगा चेक योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहो हर महीने, at least once the credit score will actually change and only if the credit score is over 700, I would say even 750, then go and buy a car and finance it. One last thing that actually impacts your credit score is getting a car. अब गाइज मैं इतनी गलतियां कर चुका था कि मैं फिर से ये वाली गलती नहीं करूंगा। वैसे तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब था बट इफ आई बाय अ कार नाउ my credit score will actually reduce a lot. Wrong. Guys, another factor that contributes to your credit score is diversity. And that makes the remaining 10% of your credit score. Guys, हमारा credit score was 618 when we came here in March and अब मई में है हम and already 745 हो चुका है. And that is because we actually took care of the 4 things that we just said very well. अब guys 1-2 महीने में जब हम कार लेने जाएंगे तो we'll actually have to give a down payment and बाकी की कार हम फाइनेंस कराएंगे. Now even if you can afford to buy the entire car in cash, you should not. जितना डाउन पेमेंट कर सकते हो करो
एंड थोड़ा सा फाइनेंस जरूर लो। उसका रीजन ये है कि क्रेडिट ब्यूरो एक्चुअली लाइक्स व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एंड यू हैव अ डाइवर्सिफाइड वे ऑफ बोरोइंग मनी। उससे क्रेडिट ब्यूरो को ये लगता है कि दिस गाय एक्चुअली पेज हिज बिल्स ऑन टाइम विच आर द क्रेडिट कार्ड बिल्स, प्लस ही इज एबल टू पे फॉर द कार पेमेंट एज वेल, विच इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोइंग दैट ही हैज डन। इससे जो क्रेडिट स्कोर होता है दैट एक्चुअली जंप्स टू एज मच एज 790 और इवन 800 इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड गाइस, दैट्स द टाइम यू एक्चुअली गो बाय योर हाउस। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी के लिए यू नीड गुड सैलरी, दो लोगों को अच्छे से कमाना पड़ेगा, बहुत सारे एलिजिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं, बट क्रेडिट स्कोर इज समथिंग दैट विल डिक्टेट whether you get a good rate of interest for your mortgage or not, which is really important because interest देते देते पूरी जिंदगी निकल जाती है। So guys, if you are new to Canada or coming to Canada very soon, just follow these 5 rules of using a credit card. You will be fine. You will actually get a very good credit rating of over 800 if you follow these simple rules right from the beginning. And that will be a good first step to buying your house in future. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मेरा भी बाय।